Negative reinforcers. Dear students, negative reinforcers are contradictory with the positive reinforcers. As we have already discussed, positive reinforcers are pleasant type of stimuli, while as negative reinforcers are unpleasant type of stimuli. Now, what is unpleasant type of stimuli? Unpleasant stimuli is that type of stimuli or any substance which gives the pain to the organism. जो स्टिमुले एक ऑर्गेनिज्म को पेन दे सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अनप्लेजेंट टाइप ऑफ स्टिमुले. द नेचर ऑफ अनप्लेजेंट टाइप ऑफ स्टिमुले इज पेनफुल. द इंडिविजुअल परफॉर्म्स द एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग. बाय विल एक इंडिविजुअल टास्क को नहीं परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन अगर वो करता है वो किसी मजबूरी की वजह से करता है. मजबूरी क्या है? टू अवॉइड और टू गेट रिड फ्रॉम द नेगेटिव टाइप ऑफ reinforcement or reinforcers. For example, condemnation by the peers. And moreover we can say that social disapproval. यानी कि एक इंडिविजुअल को टीचर जब बेइज्जती करता है, रिब्यूक करता है, तो उस रिब्यूक से बचने के लिए, कंडमनेशन से बचने के लिए या सोशल डिसअप्रूवल से बचने के लिए द ऑर्गेनिज्म और द इंडिविजुअल सिंपली परफॉर्म्स द टास्क. आई मीन टू से यू द लर्नर is able to perform the task. Otherwise, the learner is not ready to perform the task. He or she performs because to get rid from the social disapproval and condemnation by others, especially by the teacher. इस पेन को अवॉइड करने के लिए, इस अनप्लेजेंट स्टिमुले से छुटकारा पाने के लिए द इंडिविजुअल एक्ट्स as per the will and wish of others. Number 3, punishers. Punishers are basically aversive stimuli. Aversive means which are painful, based on experimental conditions. Dear students, there is one of the eminent behavioral psychologists whom we call father of behaviorism. I mean to say you J.B. Watson. Dear students, J.B. Watson ने एक एक्सपेरिमेंट शीप पे किया. तो शीप के लेग पे एक इलेक्ट्रोड फिक्स किया गया. इलेक्ट्रोड इज दैट सब्सटेंस थ्रू विच वी पास द इलेक्ट्रिसिटी. और वही इलेक्ट्रोड जो था उसके साथ में एक स्विच भी रखा गया, जो स्विच ऑफ भी होता था और ऑन भी होता था. जब एक्सपेरिमेंटर ने, आई मीन टू से यू J.B. वाटसन ने इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास की, तो दैट इलेक्ट्रिक करंट वाज द बेसिकली पुनिशर फॉर द शीप. जो ही इलेक्ट्रिक शॉक शीप को लगा तो शीप ने जोर का झटका उस टांग से दिया जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक एज ए पुनिशर लग गया. तो फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो शीप ने फिर से अपने पैर और टांग को हिलाया. नाउ ऑटोमेटिकली टांग जो है वो राइट डायरेक्शन में स्विच के साथ टकरा गई एंड स्विच ऑफ हो गया. स्विच ऑफ होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कट गई. एंड विद द पैसेज ऑफ एन टाइम कि एक्सपेरिमेंटर J.B. वाटसन इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा था. क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कंप्लीट ट्रेनिंग टू द शीप हाउ टू मेक ए स्विच ऑन एंड ऑफ. किस तरीके से एक शीप लर्न करेगी कि इलेक्ट्रिक करंट को खत्म करना. And that electric shock was aversive type of stimulus. So that is why here we defined punishment is that which is aversive in nature.
बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स, जहां पर अधिकतर हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, या ऐसा एवर्सिव स्टिमुलस जिसमें हम मेटल का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत सख्त होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इलेक्ट्रोड्स के जरिए शीप को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था एंड शीप वाज कंटिन्यूअसली स्ट्राइविंग द लेग, बाई चांस जो लेग थी वो स्विच पे स्ट्राइक होती थी और इलेक्ट्रिक करंट कट हो जाती थी। एंड टाइम केम व्हेन द शीप कंप्लीटली लर्न हाउ टू कट द इलेक्ट्रिक सप्लाई and get rid from the pain or aversive type of stimulus. This is known as punishment. Dear students, there is a difference between punishment and negative reinforcement. Negative reinforcers actually are those which precedes the response. यानी कि negative reinforcement वो reinforcement होता है which always precedes the response. रेस्पॉन्स से पहले जो आएगा उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को देता है बिकॉज वी डिफाइंड नेगेटिव रीइंफोर्सर्स आर दोज विच प्रोसीड्स टू द रेस्पॉन्स। अभी तो स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, लेकिन जो आपने एडवांस में कह के रखा है, आई विल बीट दोज स्टूडेंट्स हु विल फेल while performing particular type of mathematical exercise. So this is known as negative reinforcement or reinforcers. Now punishers. Punishers are those which follows the response. यानी कि जो response के बाद में आता है उसे punisher कहते हैं। जिस तरीके से हमने already जिक्र किया है how negative reinforcement is contradictory with the positive reinforcement. Same case is here. How punisher is different from or contradictory with the negative reinforcement. Negative reinforcement proceeds to the response, while as punisher follows to the response. ये response से पहले होता है, while as punisher follows to the response. For example, बच्चों ने अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किए। When you have evaluated the learner's performance, अब किसी लर्नर की परफॉर्मेंस कमजोर है या वो फेलियर का शिकार हो गया है, तो बाद में जो आपने दिया that is known as punishment, and what you have to use it, that is known as punisher. So these were the various operations which are involved in the operant conditioning theory. In next lecture, we will focus on new entitled theme, that is schedules of reinforcement. Hopefully believe that you enjoyed the lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you and grow strong.